welcome to our special show. I'm Gargi Rawat. Today, as part of our campaign with the Kailash Satyarthi Children's Foundation, Justice for Every Child, we're putting the spotlight on child sexual abuse and mental health. Now, one of the worst things that can happen during a childhood, it has a long-lasting impact on a person's life, and on this show, we'll be focusing on the signs that help us recognize it and also steps that we can all take to ensure it doesn't happen to anyone close to us and, of course, ideally in society at large. It's a conversation that we need to be having more and not cloak it in embarrassment or with an attitude that it doesn't happen in our society कि हमारे यहाँ ये नहीं होता है, क्योंकि होता है. Statistics have shown it's unfortunately more common than we all realize. Depending on the severity of and the number of traumas experienced, child sexual abuse can have a wide-reaching and long-lasting effect. On the other hand, children who have the support of an understanding caregiver, effective treatment, can recover without those long-term effects. So to talk about all these issues and put the spotlight on it and help us understand this issue a lot better, today we have a panel and we're joined by Dhananjay Tingle, Executive Director, Bachpan Bachao Andolan, someone who's worked very closely on this issue and helped rescue children. Dr. Meenu Dubey, Counsellor, K.R. Mangalam School, to help understand how schools deal with this. Dr. Sameer Parekh, Psychiatrist, Director, Fortis National Mental Health Program, and Pradeep Rawat, Parent and founder, Gurgaon Parents Association, because parents also need to be very aware about how to deal with these issues. Amit Dubey, ethical hacker and cybersecurity expert, because there's this new facet of having online fears and online dangers that our children are exposed to. Thank you so much, everyone, for joining us on this program and to talk about this very important issue that, as I said, we need to be talking more about. And Dhananjay Tingle, I'd like to start with you. I'd like you to tell our viewers about child sexual abuse, बाल यौन शोषण. ये कितना कॉमन है? जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत ये एटीट्यूड है कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता है, हमारे फैमिलीज में नहीं होता है, हमारे स्कूल्स में नहीं होता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि ये बहुत हो रहा है और इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी बहुत हैं. This is a very common thing. In India, the statistics show that every half an hour, 2 children are being abused sexually. And this is a big figure. And the worst part is that it is not being, this is the reported figures. The figures which are not reported maybe are even higher than this. And our cases, we have seen a large number of children are not reporting it. For this, in 2017, when we did the Bharat Yatra, that was the main aim was called Chuppi Todo. और उसका ये मतलब था कि बच्चे और पेरेंट्स और स्कूल सब लोग खुल के इसके बारे में बोलें जिससे इसके ऊपर एक्शन हो सके और रोका जा सके. In 2020, ICPF did a study on the child sexual abuse, or especially in relation to the lockdown. और उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने निकाला था कि बच्चों के यौन शोषण ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ रहा है. So this is another aspect. And third aspect which is important to be seen here is online child sexual abuse, which is happening. And with the access, and especially during the lockdown in 2 years' time, the access to the internet has become very high. The dependency on web has become high. So that even this abuse have increased. So this, we have been seeing it. We are working on this whole aspect for last 5-6 years. We have been focusing on it. And the irony is that the percentage of convictions is low. और धनंजय जी, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देखा जा रहा है कि अडल्टहुड में मतलब बहुत लंबा इफेक्ट चल सकता है अगर इसको सही तरीके से नहीं हैंडल किया जाए. मैम, दिस इज अ केस जिसमें कि हम लोग क्या साथ मिले थे लोगों से जिनके पास अभी तक उसका इम्पैक्ट रहा है. दे आर नॉट एबल टू कम आउट विद द फियर. उनको ये लगता है कि एवरी पर्सन, दे कांट बिलीव ऑन एनीवन, दे हैव अ फियर टू हैव फेथ ऑन एनीवन. वो उसके साथ साथ उनकी स्टडीज हैव बीन इफेक्टेड. रिसेंटली अ केस व्हिच हैपेंड इन फरीदाबाद, विच वेरी वेल कवर्ड बाय द न्यूज़पेपर्स एज वेल, एंड वी आर हैंडलिंग दैट केस, जिसमें बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया इन क्लास 10th आफ्टर 1 year when he was sexually abused and he was not listened properly and there was not even a proper mental support in case of on the child sexual abuse. He was always being told that it's nothing, it's a different thing, other things you are talking about, but you're not talking and you're not recognizing. Schools are not recognizing the fact that the child has been sexually abused and he needs to be counseled on that to come out of it. So that was one. The child, that's another case which happened in Chennai,
in which the girl who committed suicide giving a note saying that a girl is only safe either in mother's womb or in coffin. So these are the long-term effects also if they are not handled immediately and properly. Schools, parents, I will say, they need to take cognizance at the first step only. Right, absolutely, and that's what we're going to talk about in this show, how to deal with it, how to make sure it doesn't have this long-lasting impact on the child's mental health. Let's take a look at a report before we talk to the other panelists. Recently, a 15-year-old boy was raped by his neighbor and his friend. The boy was going home when the two accused forcefully intoxicated him and then committed the heinous crime. Kailash Satyarthi Children's Foundation, sister organization Bachpan Bachao Andolan, is now helping the child, and he's deeply traumatized, but they're helping him live a normal life. Take a look. इसी साल अप्रैल के एक शाम को 15 साल का विनय अपने दोस्त के साथ घर लौट रहा था, जब रास्ते में विनय का पड़ोसी उन्हें रोककर एक सुनसान कोने में ले गया, जहां जबरदस्ती उसे नशा करवाया और एक दोस्त के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया। डर से कांपता हुआ विनय घर पहुंचा तो अपराध बोध ने उसे कुछ कहने न दिया, लेकिन उसकी मां ने भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो बेटे के दोस्त के घर गई, जहां सारा माजरा खुला। इस घटना के बाद विनय दिमागी तौर से बिल्कुल टूट गया था। घबराहट और डर से बाहर निकलने के लिए उसे काउंसलिंग की जरूरत थी। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की सहायक संस्था बचपन बचाओ आंदोलन, जो इस मामले में समर्थन व्यक्ति के तौर पर नियुक्त की गई है, वो बच्चे को मानसिक स्वास्थ्य सहायता दे रही है ताकि वो सामान्य जिंदगी जी सके। हालांकि विनय के माँ बाप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन अपने बेटे को इंसाफ दिलवाने के मामले में अटल हैं और बचपन बचाओ आंदोलन उनकी हर मुमकिन मदद कर रहा है। विनय का केस अप्रैल 2022 में बीबीए को CWC ने सपोर्ट पर्सन बना के दिया था। बचपन बचाओ आंदोलन के सपोर्ट पर्सन बच्चे की फैमिली और बच्चे से रेगुलर टच में है। उनका काम अभी बेसिक, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, माँ बाप काम नहीं कर रहे हैं, तो इमीडिएट रिलीफ, इमीडिएट कंपनसेशन की एप्लीकेशन मूव करा दी गई है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड की मुहिम का मकसद यौन उत्पीड़न और बलात्कार के शिकार इन जैसे बच्चों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक मदद देना है। आपकी मदद से इन पीड़ितों को तेज रफ्तार से इंसाफ दिलाने में मदद मिलेगी, क्योंकि हर बच्चा खास है। All right, Dr. Parekh, I'd like to come to you now. What are the trauma-related behaviors one might see in a toddler or school-age child? Because जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि बच्चे की माँ ने recognize किया कि कुछ हुआ है, and she wasn't, she pursued it and she tried to figure out what was wrong. So she knew कि child का behavior में change आ गया है, उनको पता था कि कुछ हुआ है इनके साथ। देखिए, एज को भी अगर 1 मिनट के लिए आप साइड पे रख दीजिए, पुट एनी ह्यूमन बीइंग एंड पुट एन एक्सपीरियंस जहां आपकी वायलेशन हो रही है, बाउंड्री क्रॉस हो रही है, फिजिकली, इमोशनली, सेक्सुअली, मेंटली, सोशली, एट वेरियस लेवल्स. The individual experience a sense of horror, helplessness. मैं इससे बाहर कैसे आऊं? मैं क्या करूं? There is also a tendency to self-blame. Is it my fault? मेरी गलती तो नहीं है. The result is high percentage of post-traumatic stress disorder, high percentage of depression and anxiety disorders. Most people in young age who experience any form of violation, self-esteem पे असर आता है, अपने बारे में हीन भावना आती है, रिलेशनशिप पे ट्रस्ट नहीं आता, जैसा धनंजय जी बता रहे थे, फ्रेंड्स बनाने में हेजिटेशन आती है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस डिटीरियोरेशन ज्यादा होता है, आगे चल के काम पे, रिश्तों पे, फैमिली लाइफ पे भी असर होता है. And yes, self-harming behavior is also closely related, like जो आपने दोनों stories में बताया. ये एक fact है, इसमें कोई debate, there is no need for that, because this is a medically recognized, statistically recognized fact
and you don't even need an expert to tell you this, because it's a human reaction, it's a human experience. And that's why one needs to look at this to understand this better in the context of children and adolescents, where age plays a context when you're looking at early childhood. Then teens, it is a bit different. We also need to understand, like again, what colleagues from Kailash Satyarthi Foundation have been talking about in terms of online. So there is one which is physical directly happening. Second is when it is happening online, and online has gone up a lot. So we need to look at this in a spectrum. एक spectrum में इसको समझिए. Spectrum पहला, आप preventive के लिए good touch bad touch के लिए क्या कर रहे हैं, education क्या कर रहे हैं, parent, teacher, children. Second, the moment first problem happens, early intervention कैसे कर रहे हैं. हम बहुत closely काम कर रहे हैं with बचपन बचाओ and Kailash Satyarthi Foundation. Absolutely overwhelmingly sensitive work that the foundation is doing. And there also training of first responders, psychological first aid. Second, starting counseling and mental health support integral to all other supports, academic, physical, legal, and to continue with that to prevent a long-term impact. That needs to be seen simultaneously. Right. Media literacy for pre-adolescents and adolescents to understand how to not be swayed by the influence of modern day media and social media, which can have predators lurking around. Right. Also, now, Dr. Meenu Dubey, if it's the parents at home who may recognize a child's behavior has changed, it's the teachers at school that can also recognize that, because बच्चे ज़्यादातर या तो घर पे हैं या तो स्कूल में हैं, तो वहाँ पे अगर घर पे if your saviors, if your guardians are your parents, then schools में it's the teachers who are your guardians, and it's very important that schools also recognize this, and that teachers are made sensitive to the fact that you may have a child who's abused, and to watch out for those signs. Isn't it? Exactly. It is very, very important that you need to, closely monitor the child. And the moment you see some consistent behavioral pattern which is changed, you need to, identify it, and definitely you need to share it with all the caretakers of the child, and then look into the matter in a very serious mode. See, what comes as a challenge is when we actually talk to the parents, then it's the parents are the ones, who are actually, on the denial mode always. So because the child feels very, very much afraid about telling it or reporting it to the parent, and they don't know it. Even if the child actually says something to the parents again take it in a very lighter way. And then there is a huge gap which is there. And even if we try to confront it to the parent that this is what has happened to the child, and you need to trust the child, you need to trust whatever the child is expressing out, still, they try to mellow it down somewhere, because, most of the time the person who is visiting the family has been found that he's or she is actually sexually abusing the children. So there is a family status, there is always this kind of a dilemma involved in the parents. They don't want to throw more light on that. So there comes a big task. Of course, we from our side, from school side, definitely all the checklists are there. We keep sensitizing the entire staff, not just the teachers, but entire staff who is taking care of the children at school, right, to recognize the patterns of the child. If there is a alarming shift in the behavioral pattern, we need to identify and this acceptance is so important, because that's what we're talking about, that child sexual abuse happens is something that we know, but the fact that you can deal with it and help the child come out of that trauma and not have those long lasting impacts, that's what we're trying to talk about on this show here. Pradeep Rawat, if you could again coming back to the parents, as Dr. Meenu spoke about, how there's shame, there's denial, and so if you could tell us, what does your parent organization do, because parents need to know how to talk to children about sexual issues and body
body safety, and also if we talk here about Indian culture, our culture is ki bado ka aadar kariye, you never question an elder, and however when it comes, we need to educate children that sometimes the elders are wrong and what is good touch, what is bad touch. I completely agree with my previous panelists also that education is required not just for the children, but the parents as well. See, basically what happens in India especially, we have a kind of a social stigma attached to the fact that if something like this happens, sexual abuse or any bad behavior with a child, even the family is mostly in a denial mode, not because they don't understand the facts, but because they think if people come to know about it, the family will be the people will talk badly about the family, people will talk badly about the child. And somehow we have a belief, most of the people have this belief, that the person who's the victim, he is to be blamed for it. So first of all, we have to educate not just the children, we have to educate the parents as well. And this is what we keep on trying, that we have to understand that the one who's the victim, he needs to be supported. He doesn't need to be, scolded or talked badly about. And this is a kind of a social change we have to bring as a whole in our society as well. Because what really happens is, when somebody is being abused or somebody is being traumatized, all the family members, even the person who know him and the schoolmates also, they kind of point fingers at the person that you must have done something wrong, you must be wearing something wrong, you must have made some gesture or something. So basic idea is, we just don't have to bring the cure to the patient. We have to basically cure the disease as well. So this thing has to start right from the school level, right from the very KG or the nursery level, that we have to teach children what is the right touch, what is the wrong touch. We have to educate the staff of the school, as my previous panelist said. And basic idea is, we have to bring about a sea change in the level of thinking of the society as well. Unless we do that, these things will keep on happening. We will keep on, suppressing the real facts, and the abuses will keep on happening. The basic fact remains, unless we all decide, जब तक हम लोग ये फैसला नहीं करते हैं कि हमको खुद को भी बदलना होगा, हमको खुद के अंदर भी चेंज लाना होगा, अपने दिल से एक्सेप्ट करना होगा कि चेंजेस लाने के लिए सोसाइटी को एजुकेट करना है, सोसाइटी को समझाना है, सोसाइटी को ये बताना है कि जो चीज गलत हो रही है उसको रोकना है। बच्चे को कभी भी ये फीलिंग नहीं आने देनी है कि आपने कुछ गलत किया है। और ये फैक्ट है कि सबसे पहले पेरेंट्स को पता चलता है, क्योंकि दे कैन सी द चेंजेस चाइल्ड इज गोइंग थ्रू। सडनली दे रियलाइज दैट ही इज नॉट ईटिंग वेल, he or she is not playing with the friends, he is not spending too much time on the internet, or maybe spending too much time alone in the house. And as said, in the last 2 years, children have been given the laptops, children have been given the internet, so that is also kind of enhanced the exposure to the outer world, and that thing is absolutely. In fact, I'd like Amit Dubey to come in here, because this is another whole pitfall, or this full of danger for children. And parents also need to educate themselves about the dangers that children can face when they go online. And as we've all been mentioning, and we all know, children have been online a lot of these last few years, isn't it, Amit? मैं एक डेटा पॉइंट देना चाहूंगा कि जो इंटरनेट वॉच फाउंडेशन की रिपोर्ट है, वो कहती है कि जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटेरियल है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है इंटरनेट पर, उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट भारत से अपलोड होता है। भारत से करीब 12% डेटा अपलोड होता है हर साल। 20 लाख लोग ऐसे हैं जो ये डेटा अपलोड करते हैं। सेकंड नंबर पाकिस्तान का है, फोर्थ नंबर बांग्लादेश का है। यदि इन तीनों देशों को जोड़ लिया जाए तो 25%, यानी कि हर चौथा ऐसा वीडियो इन 3 देशों में से जा रहा है। चूंकि इनका कल्चर एक रहा है, तो इससे ये थोड़ा सा एक अलग विषय भी बन जाता है कि ऐसा क्यों है। और ये पुलिस के पास जाइए, अभी कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने लगातार हर एक स्टेट में पुलिस ऑफिसर्स को भी ट्रेन किया और उनसे जानने की कोशिश की कि कितने ऐसे केसेस आते हैं, कितने लोग किस तरीके से केसेस आते हैं। केसेस की बार सुसाइड के आते हैं, और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो किसी और कारण से सुसाइड होता है, या बच्चा गायब हो चुका होता है, या बहुत सारे डिप्रेशन में बच्चे चले जाते हैं जो इसका शिकार होते हैं। बच्चे ट्रैप कैसे होते हैं? ऑनलाइन गेमिंग जो एडिक्शन है बच्चों की, वहां से शुरू होता है। एक उत्सुकता उनकी एक्सप्लॉइट की जाती है। चाइल्ड ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा अपराध बन गया है। मैं आपको बताऊं, चाहे स्टॉकिंग हो, चाहे साइबर बुलिंग हो, चाहे चाइल्ड ग्रूमिंग हो, चाहे सेक्सटॉर्शन हो, ये सारे जो अपराध ऑनलाइन वर्ल्ड में क्रिएट हुए हैं, बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। Right. में क्या I'm sorry to interrupt you there. We'll slip into a short break, but we have to talk about this longer. So you've spelled out all the dangers online, and on the other side, we're going to talk about what parents can do and what they need to watch out for as well. We'll slip into a short break and be back with more. Stay with us. निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े।
Welcome back to our special show where we're talking about child sexual abuse and the impact that it can have on children, and also what parents, teachers, society can do to ensure that children get the best help, best sort of counseling possible to deal with these issues so it doesn't have a long-term impact. Now, before we went into a break, we were talking about the dangers on the internet that many children are now facing, especially given that children have been using their gadgets and laptops more and more in the last 2 years. And Amit Dubey, cyber expert, Amit, you were just telling us about the kind of dangers there are, how in India it's a lot more, we don't even realize this. But tell us now, what can parents do? Parents क्या कर सकते हैं बच्चों को safe रखने के लिए ऑनलाइन, जब वो ऑनलाइन जाते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन हैज बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन एंड यू कांट स्टॉप इट. सो व्हाट कैन पेरेंट्स डू? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक मोडस ऑपरेंडी बता दूं जिसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है. चाइल्ड ग्रूमिंग जैसे होती है, रोब्लॉक्स हो, हीरो वॉर्स हो, आजकल बच्चों से पूछो तो हर बच्चा डिस्कॉर्ड पर है, जो कि एक चैट मैसेजिंग ऐप है. ये जो एप्स है बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसमें आप अननोन लोगों से बात करते हो. वो बड़ी एज का भी हो सकता है, वो आपसे आपकी उत्सुकता को एक्सप्लॉइट करके दोस्ती करता है, आपको लगता है वो आप ही की एज का है, और उसके बाद बच्चा एक्सप्लॉइट होना शुरू होता है, या तो उसकी वीडियोस बन जाते हैं या फिजिकली भी एक्सप्लॉइट होता है, वो वहां चला जाता है. खासतौर से 15-16 साल के जो बच्चे हैं, बच्चियां, उनके संग ऐसा बहुत हो रहा है. अब ये सारे गेम इसलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें काफी सारे ग्लोबल चैट फैसिलिटी देते हैं, मल्टीप्लेयर गेम्स बोलते हैं जिसमें कोई भी बंदा आपसे बातचीत कर सकता है. वहां एक लिंक आता है, बच्चा क्लिक करता है, और उसके बाद बच्चे के फोन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सामने के पास चली जाती है. तो सामने वाला बोलता है, अच्छा तुम्हारा फोन इतना चार्ज है, यहाँ बैठे हो, पटना में बैठे हो, ये कर रहे हो. तो बच्चा उत्सुक हो जाता है कि इसको कैसे पता. ये बहुत कॉमन हो गया है. अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बच्चा जरा सा भी आपका टेक गीक लगने लगे तो समझ लो वो गेम्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व है, और वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली यही उत्सुकता उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बने. तो ये ध्यान रखिए, कोई भी बच्चा आपका बहुत ज्यादा गेम खेल रहा है या इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उस पर नजर रखिए. बच्चों को रेगुलेट कीजिए, वो अननोन लोगों से चैट ना करें, उनकी बातों पर भरोसा ना करें, चाहे वो उनकी उत्सुकता ही क्यों ना जागृत करती हो. ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो पेरेंट्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं. दूसरा, लिमिटेड जो इंटरनेट एक्सेस बच्चों को अभी देना होगा, कि टीनेज बच्चे जिस हिसाब से ओवर यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, वो भी उनके लिए चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो एक्सप्लॉइट होना शुरू हो जाएं. जैसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे आप देखिए तो बच्चियां ऐसे ऐसे वीडियोस बना के डाल रही हैं, प्रोवोकेटिव वीडियोस, जो 13 या 14 साल की बच्चियां. ध्यान रखिए कि ऐसा क्यों है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस एज ग्रुप के लिए शायद वो चीज करना जरूरी भी नहीं है और ठीक भी नहीं. तो ये मेरे ख्याल से इग्नोरेंट जो पेरेंट्स हो जाते हैं, वो अल्टीमेटली एक तरफ बच्चे को पुश कर रहे हैं, उनकी इग्नोरेंस से बच्चा खतरे में आ जाता है. All right, Dr. Parekh, I'd like you to come in here and also tell us about parents and it's something I think a lot of Indian parents don't recognize. नहीं, हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते हैं, नहीं ऑनलाइन वो पढ़ाई कर रहे हैं. डिस्कॉर्ड तो शायद बहुत सारे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं है क्या है. इट्स अ चैट सर्विस. कैट फिशिंग नहीं मालूम है बहुत से पेरेंट्स को, कि जो बड़े उम्र के लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो बच्चों की एज के हैं और उनसे मतलब बातचीत करना शुरू कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू, and if you could share with us what kind of examples you've seen of this. गार्गी, देखो मुझे क्या लगता है दैट आई डोंट सी इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पेरेंट्स और सबकॉन्टिनेंट पेरेंट्स अलोन. स्टैटिस्टिक्स हमेशा से कहीं ज्यादा कहीं कम होगा, बट ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड है. No, absolutely, yes. दूसरी बात मुझे लगता है जो बहुत जरूरी है समझनी, हम बात ये करते हैं पेरेंट्स क्या करें, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो अ स्मॉल पेग इन दिस एंटायर जिक्सॉ. पेरेंट्स आज की तारीख में हमें समझना जरूरी है, adolescents' ability to be on internet is far more savvy than people my age. So जो रोल है यहाँ पे, parental role is more about observation, role modeling, facilitating, encouraging children to have more outlets. दोस्तों से मिलो, बाहर जाओ, स्पोर्ट्स करो, एंजॉय करो. At the same time मुझे लगता है कि मीडिया लिटरेसी एज एन इंटेग्रल कंपोनेंट ऑफ एजुकेशन आने वाले सालों में हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है आना. और मीडिया लिटरेसी इज नॉट मियरली अबाउट बी सेफ, डोंट शेयर इंफॉर्मेशन. मीडिया लिटरेसी इज ऑल्सो अबाउट व्हाट मिस्टर दुबे वाज टॉकिंग अबाउट, सोशल कन्फर्मिटी से कैसे बचना. लोग अगर कोई चीज पोस्ट कर रहे हैं तो आपको सेम करने की जरूरत नहीं है. लाइक्स के पीछे नहीं भागना है, व्यूज के पीछे नहीं भागना है. यू डोंट नीड टू क्रॉस अ लाइन to get attention.
ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करनी जरूरी है, ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में बात करनी जरूरी है। और ये सारा हो सकता है अगर हम स्कूल और कॉलेज में मीडिया लिटरेसी के बारे में कंसिस्टेंटली काम करें, while obviously educating parents। मुझे लगता है कि मीडिया एजेंसीज एंड हाउसेज लाइक योरसेल्फ हैव मोर कन्वर्सेशंस ऑन मेंटल हेल्थ। हम मेंटल हेल्थ के बारे में कम बात करते हैं, बात सिर्फ अब्यूज की या ऑनलाइन गेमिंग की नहीं है। दीज आर ऑल रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। अगर आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए वेयर यंग पीपल और अदर्स कैन टॉक अबाउट मुझे परेशानी है, मुझे दुख हो रहा है, मेरा मन अच्छा नहीं है, मुझे किसी से बात करनी है, अनम्यूट योरसेल्फ। बट इफ आई अनम्यूट माई सेल्फ, I need somebody to unmute compassion, psychological first aid, and give me that support. So you need to see this in a complete picture. Role models and media houses and social media platforms need to be responsible, self-censorship, responsibility, peer reviews. Schools with media literacy and mental health curriculum. NGOs like our colleagues at Bachpan Bachao and Kailash Satyarthi Foundation doing what they do, giving legal support, involving mental health experts both in prevention, training, involving parents, training teachers, basic counseling skills, and whenever there is an incident of struggle, early identification, early intervention to prevent long-term harm. This is the roadmap that all of us need to work on. We are all stakeholders in this. हम सब इक्वली जिम्मेदार हैं। हम बहुत बार मुझे लगता है कि पेरेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि वो ये करें या वो करें। मुझे लगता है कि जब तक हम सारे मिलके नहीं करेंगे, absolutely, it has to be, you know, a societal effort, and this recognition of that the children are facing these dangers and sexual abuse. Dhananjay Tingle, if you could, you know, tell us about if there is an instance of child sexual abuse, बाल यौन शोषण किसी परिवार में हुआ है, do parents often know कि कहाँ जाए, हम किसको अप्रोच करें, कैसे इसके साथ डील करें? लीगल एस्पेक्ट भी होता है इस पूरे मामले में। गार्गी जी, मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा यहाँ पे, और ये एक बहुत दर्दनाक बात है जो हमारे भारत यात्रा के समय कैलाश जी के साथ एक बच्ची ने स्टेज पे आके बोली, वो बोलना चाहती है कुछ, राजस्थान की बात है ये जी। और बच्ची ने ये कहा कि सर, मेरे साथ यौन शोषण हुआ है, मैंने घर में बताया, किसी ने नहीं माना, पुलिस में गई, वहां पे पुलिस वाले ने कहा कि तुमने कुछ ऐसा नहीं किया, बड़ा आदमी है, वो प्यार कर रहा होगा। उसने उनको फिर उन्होंने कहा कि नहीं, तूने ही कुछ किया होगा, किसी ने विश्वास नहीं किया। एंड देन शी आस्क्ड, अब आप बोले हम, अब आप बताओ हम कहां जाके बोले और क्या। सो दैट इज द थिंग, दे आर सिस्टम्स, दे आर पीपल सिटिंग देयर, बट यस, वी नीड टू नो वेयर टू गो। अ चाइल्ड नीड्स टू नो बच्चे को कहां जाना है। अगर माँ बाप नहीं सुन रहे हैं तो कहां जाना है, स्कूल नहीं सुन रहा है तो कहां जाना है। दिस हैपेंस। हम लोगों ने 2015 से इसके ऊपर एक चाइल्ड लाइफ एजुकेशन करके करिकुलम बनाया था, जिसका मकसद ही है कि बच्चे को ये पता हो कि अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है, और ये बात मैं बहुत साफ तौर पर बोलता हूं कि बच्चों को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि दूसरे जो कर रहे हैं उनका इंटेंशन क्या है। ये हमारा सोचना है कि बच्चे को नहीं पता चला, ये गलत है, लेकिन बहुत जल्दी बच्चों को पता चल जाता है, दे नो। सो बच्चे जो है उनको हम लोग यही है कि बच्चे पहले पेरेंट्स को अगर पता चलता है वो सीधे पुलिस पे इन्फॉर्म करें, पुलिस के पास FIR लॉन्च हो, और जो लॉ है पॉक्सो का, दैट इज वेरी क्लियर कि अगर किसी को भी पता चलता है, अगर मुझे पता चलता है कि मेरे नेबर में बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, और अगर मैं रिपोर्ट नहीं करता हूं तो आई एम इक्वली लायबल, मेरे ऊपर भी एक्शन हो सकता है। सो लॉ इज वेरी क्लियर इन दिस। तो इसमें सीधा पुलिस को, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं जो बच्चों के देखरेख और उनकी सुरक्षा के लिए बनी है, उनको इन्फॉर्म करें। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को इमीडिएटली इन्फॉर्म करा जाना चाहिए बाय एनीवन, अगर बच्चा जिससे शेयर करता है। अगर स्कूल में, this is what happens when the school, even school counselors, if they come to know any effect of this kind of thing has happened, they should be reporting to the police. And मैं यहाँ पे मीनू जी से थोड़ा सा डिफर करना चाहूंगा, वो ये कहूंगी पेरेंट्स इज फाइन, लेकिन स्कूल्स भी अपनी इमेज को बचाने के लिए दे डोंट कम फॉरवर्ड टू रिपोर्ट द मैटर।
And this, as we have seen in many cases where it has happened, that the school has tried to hush up the matter, and in the end, things have gone bad. And again, we come down to the shame associated with it, whereas it shouldn't be, that shouldn't be the focus. The focus should be the child's welfare and ensuring the child can come out of this trauma. Dr. Meenu, I'll give you a chance to respond to that and also talk a bit about it, because that's it. What Dhananjay ji said, it's a fact. We've seen this happening, and schools also need to change their attitudes to this, change the way they deal with cases of child sexual abuse. We'll slip into a break and talk about that when we're back. निकल पड़े हैं हम निकल पड़े। Welcome back to our special show. We're focusing on child sexual abuse, the mental impact that it can have on a child, and what we as a society can do in dealing with this horrific crime that we see happening more and more to children. Now a report, imagine the psychological impact on a 13-year-old child who's been sexually abused and threatened by her own father and cousin. Such is the plight of a young girl, Ashi. The Kailash Satyarthi Children's Foundation, sister organization Bachpan Bachao Andolan, is acting as the support person for this child and also providing legal help to her mother so that Ashi can get justice. We have, of course, changed the name of the child to protect her identity. Take a look. 13 साल की उम्र की किसी भी बच्ची की तरह आशी की जिंदगी स्कूल, परिवार और दोस्तों के बीच घूमती थी, लेकिन एक दिन उसकी दुनिया एक बुरे सपने में बदल गई। उसकी मां ने ध्यान दिया कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहे हैं और वो उसे चेकअप के लिए अस्पताल ले गई। मैंने कहा बेटा पैर कैसे सूज रहा है, मैंने उससे पूछा किसी का, तो कह रही जब से मैं वहाँ फूफी के यहाँ गई जब से मेरा कुछ नहीं हुआ। तो जब मैंने देखा था फिर वो क्या नाम है डॉक्टर के लगे, वो फिर वहीं पुलिस थाना हो गया वहीं पे। चेकअप से पता चला कि वो गर्भवती है। तब आशी फूट पड़ी और उसने माँ को बताया कि कैसे उसके पिता ही उसके साथ रेप कर रहे हैं और उसे चुप रहने की धमकी देते रहे हैं। शुरू मैंने बताया, उन्होंने धमका रखा तेरी अम्मी को छोड़ दूंगा। वो नशा करते हैं ना, पहले नशा करके बच्चों को मारते हैं, मुझे मारते हैं। तो आप कहते हैं जी, तो इस मारे उन्होंने कुछ बच्चों ने कुछ बताया नहीं। लेकिन यही नहीं था, आशी ने बताया कि उसे उसके 15 साल के रिश्ते के भाई ने भी रेप किया है जब वो अपनी आंटी से मिलने उसके घर गई थी। अपनी बेटी के लिए इंसाफ हासिल करने के संकल्प के साथ मां ने जरा भी देर किए बिना पुलिस में शिकायत की। आशी के पिता को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, उसके रिश्ते के भाई को भी गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में जमानत पर छोड़ा गया। बाल कल्याण समिति के आदेश पर और परिवार की सहमति के साथ इस साल अप्रैल में आशी का गर्भ गिराया गया। हादसे की शिकार इस बच्ची के साथ कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन से जुड़ी संस्था बचपन बचाओ आंदोलन खड़ी है। वो उसे जरूरी कानूनी मदद मुहैया करा रही है। जो हमारी सपोर्ट पर्सन थे, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि बच्ची को इस ट्रॉमा से बाहर निकाला जाए। कंपनसेशन के लिए एप्लीकेशन मूव की गई कोर्ट में और उसको हम लोगों ने एक स्पेशल रिहेबिलिटेशन पैकेज के लिए, एक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए 10,000 रुपए का CWC मूव थे, जो CWC ने अप्रूव कर दिया, रिकमेंड कर दिया है। आशी जिंदगी में लौटने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ जो कुछ गुजरा वह फिर से ये डरावना तथ्य याद दिलाता है कि बाल उत्पीड़न के 90% मामले परिचितों द्वारा ही होते हैं। हमारे बच्चे घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन का जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड अभियान देश भर में बाल उत्पीड़न और बलात्कार के शिकार ऐसे पीड़ितों को कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता मुहैया कराता है। आपका सहयोग ऐसे पीड़ित बच्चों की बहुत दूर तक मदद कर सकता है। आगे आए और अनुदान दें। हर बच्चे की अहमियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।
All right, very, very sad story there and the plight of one child. And Dr. Meenu Dubey, if you could talk about, the kind of interventions that one needs to provide a child if you can identify the problem, be it a school. And, earlier we spoke about how sometimes schools also try to hush this up because of the shame associated with it. But it must never be the child's shame. It has to be, shame that we could not prevent it. But we have to then, look at the positives and how we can help the child and ensure the trauma is minimal. Yeah. Gargi, I actually, agree with what Mr. Dhananjay Tingle said, that some of the schools actually, they deliberately hide these cases. And look at the schools, ये जो हमारे privileged schools हैं, इन्हीं स्कूलों में हम लोग ये programs run करते हैं या अपनी तरफ से sensitization करते हैं. But there are thousands and millions of schools, गांव के स्कूल्स हैं, छोटे छोटे कस्बों के स्कूल्स हैं जहां पे इन सब चीजों के बारे में बात भी नहीं की जाती है. और वहां पे अगर आप इन सब इश्यूज को लेके आते हैं तो उनका एक रिएक्शन बहुत ही अजीब तरीके का होता है, क्योंकि उन लोगों ने ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज और इस तरह की टर्मिनोलॉजीज, neither they believe onto all these things. When we try to actually tell them and convince them that what is this is basically POXO and all these terminology, when we tell them, then it just goes out of their heads. So it is very, very necessary step to penetrate to all these schools, whether they are small, whether they are government schools, the public schools or the privileged schools. Everywhere you have to do it. That is then only we can see this 53% of the statistics of children getting abused. You're absolutely right, and which is why we need a lot more awareness. This has to be a conversation, campaigns like this one, exactly. Justice for Every Child. It's what we're trying to do to create awareness, and also to create awareness about legal remedies and help that's at hand for children who face this. Pradeep Rawat, being a part of this this parent association, tell us a bit about when you talk to parents and try to create this awareness, and how parents, when faced with this, if a child ever discloses an abuse, then the parent can never, react with a sort of a blame on the child. कि इस तरह का reaction नहीं हो सकता है कि बच्चे की गलती है इसमें. I totally agree with you. The fact remains कि जब भी हम parents से इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि basically being a child supporter myself, I am very active in social media also. Lot of children write to me on Twitter also. They have certain problems either with the authorities or somebody is troubling them, even the peer pressure of doing certain things. And when I ask children, you can discuss this problem with me, being a person who you don't even know, you're just meeting me on Twitter or social media. Why can't you discuss the same problem with your parents or with your family? So they say that we are scared. If we talk to the parents, they react differently. They start blaming us. They say, just because you are spending too much time on Twitter or you're spending too much time on social media, Instagram, you are making a mistake. The fact remains, parents need to be educated first, then the children will become rather feel more safer. Same thing, I can suggest one more thing. All the schools, whether they are government schools or private schools or public schools, whatever schools they are, they should have a suggestion box. And that should be mandatory for every school. Government should in fact introduce this idea of having a suggestion box for children, and that suggestion box should clearly say if a child feels aggrieved because of anything, not just physical touch or sexual behavior, anything, he feels aggrieved, he should write. If he wants to mention his name, or that letter should be given to the suggestion box, so he could put it there, and that suggestion box should be opened in front of a parent-teacher meeting, not just the teacher itself, because as the previous panelist said, sometimes schools try to hush up the matter. So once that thing happens, it will help not only the children, it will help the society as well, that we will know what exactly is happening. And as far as parents are concerned, yes, I agree. When I try to talk to the parents, sometimes they just try to laugh it off the matter. They said, no, this is nothing like that. Our child is, he or she doesn't want to study. That's why he's creating reasons or giving excuses that because somebody is troubling me, that's why I'm not studying. So basic idea is we need to create a system of checks and balances. In that system of checks and balances,
If parent is making a mistake, school should be able to intervene. If school is making a mistake, parent should be able to intervene. And if both are making a mistake, then society as a whole, me being a neighbor or me being a child activist or somebody from the law side, somebody from the government side, there should be in social media campaigns. I agree with you that this justice for every child is a good social media campaign, but I'm sorry to say that is not been highlighted too much. I mean, not many people support it. And even if you involve some celebrities, I totally agree that celebrities do bring people, but celebrities don't spend that much of time in these campaigns. Involve people like us who are actually, in touch with the we were trying to involve everyone, in fact, in the course of this entire campaign, speak to everyone. That's why we have you on this show right here. And, and you're absolutely right. These checks and balances are needed in society. We're going to slip into a short break now and return. And I'd like final comments from everyone on this panel today on what we can do regarding this evil of child sexual abuse, and also the fact that if we help the child, we can ensure that the trauma is not long lasting, it doesn't last their whole lives. We'll slip into a break and be back with more. निकल पड़े हैं, हम निकल पड़े। Welcome back to our special show on child sexual abuse and mental health, and very little time left, so I'd like to go across to Dr. Parekh. Dr. Parekh, if you could just sum up for us, we've spoken about a lot of issues in the course of this show. Basically what we're trying to emphasize is that children and the parents and the schools can help the children if they face any kind of abuse, and we have to ensure that they face as little trauma as possible once they do come out and speak about it. It's our collective responsibility. You look at your panel and there lies your answer, starting with you. Media houses need to talk about issues that matter, prioritize mental health. If you prioritize mental health, a lot of aspects related to the facets of mental health automatically will be addressed. If you are hushed about mental health per se, you'll be more hushed about abuse. You look at the roles of NGOs, the remarkable work Bachpan Bachao Kailash Satyarthi Foundation does. We need many more people doing this. We have Mr. Dubey here who talks about media literacy, especially modern day media, social media, create awareness, educate people. Schools are being represented here. Media literacy integral to school education, basic counseling skills for teachers, psychological first aid for all first responders, and ensuring the mental health aspect of children needs to be highlighted, skills, prevention, all of that. And then of course the role of parents and teachers and body. You put all of this together, continue to talk about it, and ensure and realize justice for every child happens when every child matters. Health for every child happens when mental health for every child is a priority. And it takes a village to raise a child. A final short comment from you, Dhananjay Tingle. Gary, thank you. I agree what Dr. Parekh said, and one thing which I would surely like to highlight is that issues of mental health and the mental health professionals are very few in the country. In the smaller districts across India, the government's district mental health program has failed. There are no psychiatrists or psychologists available in the small districts. For this, yes, from Kailash Satyarthi Children's Foundation, BBA, along with Fortis, with the support of Fortis and Dr. Parekh, we are providing support to more 100 districts on counseling, on the mental health. That is what we realized. And while working, we have come to know even the government agencies, for protection of children, they all are at helpless because there are no mental health professionals available. So we need to highlight this issue of, the government also, and help for the children in, rural areas as well. And awareness, I think, is the most important. We're completely out of time. I'd like to thank all our panelists for joining us on the program today to talk about these important issues. And for the viewers, you can also join us on the 8th of May at 4 p.m. for a special 5-hour telethon. We're going to speak to Kailash Satyarthi and speak about the entire campaign and the impact it's had. So do tune in. Thanks for watching. Goodbye.
निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं, निकल पड़े हैं।